Happy morning, everyone, and welcome to day 26 of our magic book journey. A Happy lovely morning morning. to all of you. So, how is Happy morning to everyone? all. Are you feeling joyful? Say yes. Yes. Are you Yeah, feeling happy? Say Yes. yes. Happy, happy, yes, happy. Are you feeling on top of the world? Say yes, I am. Yes. yes, Lovely, lovely. So, just by saying this yes to everything, how were you feeling? खाली एक yes बोलना होता है अपने आप को and how our energies change, isn't it? And when we say it with feelings, when we say it with emotions, then it's a different thing altogether. So every morning when you wake up, just say this to yourself: I am feeling joyful. I am feeling happy. You know, whatever we are doing, you can keep on doing whatever you're doing when you wake up in the morning. But the first words, say that to yourself. Yes. Yes, everybody agrees. Yes, Yes, no. yes. So now from today onwards, there's no in our dictionary. Everything is yes, yes, yes. So say yes, yes, yes. 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 Lovely, lovely. We start today with the glad game. Why is my voice echoing? Okay, so it stopped now. So let's start today with the glad game, as in you're going to say what you are grateful for. We start the sentence with I am glad, I'm so glad, or I'm glad to whatever, whatever. Okay? Is everybody ready? Yes or Yes. no, or yes and yes? Yes. Yes. Lovely, lovely. So let me begin, and then I will. Do you want me to call names, or each one will unmute yourself? It's better I call the name because maybe, many of you will unmute yourselves. Yeah. So, yeah. So, is everyone ready? Okay. So, I am so glad to have a happy body and mind, to have a healthy body and mind. I'm so glad. Yes, Bharatji. Yes. I'm so glad. You have to start the sentence with this and complete it. Yeah, you can't take so much time. I'm so glad. Just start and you'll be able to. So you're not able to unmute yourself? Hmm. Huh? Yes, yes. Yeah, so start. मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोले. तो आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आई एम सो ग्लैड क्योंकि ओके, ओके. हाँ तो जो भी आपके आए ना whatever comes up just say that we just said we are happy we are joyful yes so now मैं अभी बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं मैजिक का सेशन करके मेरी लाइफ में मैंने काफी कुछ पाया है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ. lovely next Hina ji Uh, I'm so glad because I have a pure heart. lovely Ishita ji come on let's be ready huh I'm going to come back I to you am again I'm so glad that I am always happy. lovely Namrata ji I'm so glad to attend the morning session. get that energy are you still feeling I'm so glad to this beautiful morning. lovely Pooja ji I'm so glad to have a loving, caring family and friends. amazing thank you who else is there am I not able to see the participants I don't know who else is there please unmute yourself anybody else is there No. No. okay lovely so I start the circle again
I'm so glad to have all the participants in this magic book session who are so committed and who are so sincerely waking up in the morning and coming for the session. Thank you. So glad. Yes, Bharatji. मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन की मॉर्निंग के लिए। हाँ, try not to repeat what others have said. आप कुछ और नया ढूंढो, नया निकालो अपने दिमाग से. You will मैं really बहुत feel कि कहीं से भी. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर हिना मुझे मिली है। Okay, हिना जी. हिना जी. Yes. Come on, just start the sentence. कुछ तो कुछ आएगा. Okay, so I'm coming back to you, Ishita ji. Come on. I'm so glad to have this beautiful journey of life. Amazing. Namrata ji. I'm so glad to have a beautiful house. Pooja ji. I'm so glad to have a 24/7 water in my tap. Lovely. Hina ji. टोटली ब्लैंक वंदना जी, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों. एक बार सेंटेंस बोलिए. I am so glad and look around you. Just look at your body, look at your mind, look at anything you can pick up from your body. कुछ भी आप ले सकते हो ना. Just I'm so glad to have such lovely fingers from which I can work with throughout the day. I'm so glad to have hands and legs through which I can work. जो भी, so many things will come. I'm so glad for this beautiful phone that I have that I can attend today's session. This is what we have been taught to do through the practices. उसी को वापस लाना है अभी. I'm so glad I have cup of tea. You have proper, sorry. I'm so glad because I have cup of tea. Okay. I thought you'll say I'm so glad to have a loving partner like Bharat. नहीं, फिर आप बोलोगे रिपीट करोगे क्योंकि आज पहली बार उन्होंने मेरे लिए, हम एक्चुअल में अभी देहरादून है तो उन्होंने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई, तो आई एम सो ग्लैड. Wow. So say, so glad that Bharat has made this cup of tea for me. Yes. Acknowledge that na in front of everyone. हाँ, वो मैंने पहले 3 बार उनको थैंक यू बोल ही दिया. हाँ, ओके. बट सबके सामने बोलोगे तो उनको और अच्छा लगेगा. थैंक यू. Lovely. Okay, Asya, you've just joined. We're playing a glad game. So you have to start the sentence with I'm so glad, and then you complete with whatever you are grateful for. So are you ready? Okay. Yes. I'm so glad. I'm so glad that I'm attending the lecture today. Okay, lovely. Okay. Who else? Who wants to say? Pooja ji. I'm grateful. I'm so glad to have a milkman who delivers milk at my door. Amazing. Okay, lovely. Namrata ji. I'm so glad I have beautiful kids. I have my husband to help me in all areas of my life. Beautiful. I'm so glad. Amazing. And clap for yourself. Wow, you're so glad. Ishita ji. I'm so glad to have a beautiful parent. So little louder. I'm so glad to have such beautiful parents who have given me all the, who have always fulfilled all my dreams and all my needs and everything. Lovely. Thank you everyone. Thank you so much for participating in today's game. And now just by playing this for minutes, how are you feeling? How are you feeling just by saying how you're glad, you're grateful? On the top of the world. Wow. And so actually, when you say in front of others
and when you write or when you speak to yourself, all these three things are different. They have a different impact effect on you. You know, आप मनी मन बोल दोगे और आप verbally जाके बोलोगे, even if you are in front of that person, even a gentle touch says everything. So this glad game really makes a difference. It shift our energy on the higher level. Yes, Totally, it shifts totally. your energy. It shifts your energy immediately. And see, just 5 to 10 minutes in a day you have Yes. to give. So play with everyone in your house. Engage everyone. सबको बुला लो अपने साथ में और एक circle बना लो, एक energy circle बना लो, and then start playing this game. You will notice कि जो भी abrasions, conflicts, disagreements, arguments जो भी हुए हैं वो सब dissolve हो जाते हैं सिर्फ इस glad game से. And it's really a magical game. You can start playing it. Yeah, and you can share your experiences if you feel like. Okay, so now किन किन लोगों को 7 cues मिल गए थे कल? किन किन many cues I much got more than 7. yesterday. Yes. I also get many. Lovely. More than 7? Yes. Yes. Definitely more Wow. than 7. Awesome. At every moment I got, and I thought this is the cue from the universe. Amazing. And so glad. मजा आ गया सुन के. Very happy. बहुत अच्छा लग रहा है. So would you It's like like to being share a one or two? student. कुछ एक It's दो like share being करना a चाहोगे? student, all your Yeah. sorry. Yeah, sorry, two people are talking. Yes, Ishita ji, Amrita ji, Yeah. what? It's like being a student and looking at your life and seeing around that what you can grasp and learn all the time, Yeah, so you are always in that learning mode and Yes. receptive mode and aware. You are aware of whatever is happening around you, isn't it? Yes, Lovely. So yesterday I also received many cues, many cues, and it was really awesome. मतलब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ मैंने देखा, उसमें से सब निकल के आ रहा था, isn't it? All of you? Yes. Yeah. And we are learning from that. Yeah, you are. That's really powerful and important that you are learning, because this life is all about learning, unlearning and relearning. तो ऐसा नहीं है कि हम every moment we are learning something new. That's so beautiful to notice. I want to share. Yes. Yesterday my grandmother was passed away. She was 95 years old. Okay. And just before half an hour, I'm talking with my mother-in-law that she was very good. My uncle is also taking care of her, and he was also good. And within half an hour, I got the news that she passed away. Okay. So I was surprised. Before half an hour, I'm thinking about her. So you got the cue from the universe. That Yeah. that intuition or whatever we call it. Yeah. So And, when we are reading yesterday's chapter, in relevance to yesterday's chapter, in relation to yesterday's chapter, you actually got the magical cue. Yes. Yeah. So that's what it's all about. Yeah. You want to say something else? Last from 2 days, I'm thinking. I'm thought about her. That thank you, grandmother. Because of you, we all are here. Okay. Because of her, अब तक हम लोग ये जर्नी तक पहुंच सके हैं. और थैंक यू बोल रही थी उनको, मैं आभार दे रही थी, मतलब grateful. I'm grateful to her. Yes. And yesterday I got news. I was something, मतलब मैं डाउन हो गई थी थोड़ा. मैं एकदम इमोशनली उनके साथ अटैच भी हो गई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था मैंने याद कर दिया. मैंने वो पल महसूस कर दिया बचपन से उनके साथ जो मैं रही थी, उनके साथ जो भी मैंने टाइम उनके साथ पास किया है. मतलब वो याद आ गया मेरे को. 2 दिन में मैंने उनको याद कर लिया. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द क्यूज और वॉट एवर इट इज फ्रॉम यूनिवर्स. उन्होंने मेरे को याद करवा दिया. Yes.
and she's in a much better space now, a happy space. Happy space. Yeah, so even we all feel that what happens after death. So just bringing this in, touching this, since it has come, that after death, we are in the most beautiful space, much Yes. happier space than we are now. Yes, yes. Yes. So anybody else, Ishita ji, wanted to share? And please decide who wants to read today's chapter, so that we can start the chapter and do something else also and not waste time in that. Yes. Who wants to share? Yesterday I got a bad news. मतलब I heard a bad news from my maid. मतलब उसी से मुझे क्लू मिला, ये उनके कोई मासी की लड़की या किसी को हर इन-लॉज ने उसको जला दिया, जिंदा जला दिया ऐसे. And she was very young. Can you start your videos, everybody? Please, I'm requesting you all. I forgot to tell the others in the beginning. Please start your videos so that we can all see you talking. Lovely. हाँ, बोलिए. तो मैंने जब ये सुना, मतलब वो कल बहुत डाउन थे, वो मतलब वो आते हैं तो ऐसे बातें करते हैं, ऐसे मम्मी के घर पे हूँ ना मैं, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मेरी मौसी की लड़की को मतलब उसके इन-लॉज ने कुछ झगड़ा हुआ तो जिंदा जला दिया, एंड शी डाइड यस्टरडे. So I felt very bad for her because she has very two young kids. Then I was just thinking, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कितने अच्छे इन-लॉज मिले हैं जो मेरी बात, मतलब जितना प्यार करते हैं, जितना केयर करते हैं, मतलब तभी मुझे से रियल, मुझे मालूम है वो बहुत अच्छे, बट yesterday I felt very much for them कि वो इतना लविंग, इतने केयरिंग है, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है ऐसे. So you were really, yesterday really I just wrote that I'm grateful for my in-laws, so loving and caring in-laws. Yes, good cue you picked up. Very nice. एक तो होता कि आप उसमें blame में चले जाते, criticism में चले जाते, how can anybody do like this? But you took out the cue because we knew that we read yesterday's chapter and उसमें से क्या हमें क्यों निकालना था, what the universe is trying to tell us. Lovely, lovely, really nice. Nice sharing. Yeah. Who else wants to share? Please start your video and share. Yes, no one? No one wants to share? Okay, who wants to read the chapter? Who wants to read today's chapter? Oh, wow. Everyone is silent. Yes? Ishita. Yes. Yeah. So I think so you can become our official reader. Okay, I don't mind. I like it. Lovely. I'll tell you a reason behind that also. I used to read a lot when I was small. When I got into architecture, where we didn't really have anything to study. Okay. So yeah, so then I started like I thought, okay, I'll start reading here at least. I get a habit again. I just literally stopped reading everything. Wow. And thank you for putting your video on. I could see you visually today. Awesome. Awesome. It's nice to connect, you feel connected when you see each other, isn't it? Yeah. Yeah. Awesome. Awesome. Nice to see you. Lovely. Thank you. Yeah. So you can start reading. Okay. Okay. Before that, sorry. We'll see today's magical picture. Yes. Let's decode. Come on. Everybody just think outside the box. अपने imagination की lights को on कर दीजिए. उसके बाद में आप ये picture को देखिए. Just today let's come. Okay, sorry. Just let's come from outside to inside. जो picture के बाहर है और अंदर है, उसको हम देखेंगे. मतलब ये जो square बना हुआ है, this is actually the outside of the picture, if you can think that way, and then come inside. Yeah. There's a new way of decoding today. पहले बाहर की तरफ देखिए, फिर अंदर आइए.
if not, अगर नहीं हो रहा है तो फिर जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लीजिए. There is Outside, light Auntie, coming in the from blank space. outside. There's light coming from outside. Okay, what is that outside? Can you decode that? Window. Acha. Small window. Okay, okay, lovely. It's like a cave. It's like a cave. Okay, awesome. And the rays of sun. मतलब अच्छा. अंधेरे में कहीं तो भी रोशनी की किरण है. किरण अच्छा. मतलब हाँ किरण आती है. Okay, lovely, lovely. It's a waterfall. There's a waterfall. Okay. घने बादलों में से ये प्रकाश आ रही है. घने बादलों में से प्रकाश आ रही. लवली इमेजिनेशन. ऑसम. बहुत अच्छा. यस. ऑसम. नाउ स्टार्ट कनेक्टिंग. जो हमने गैदर किया है क्या है, क्या निकल रहा है इस पिक्चर से, क्या हमें सीखने को मिल रहा है इस पिक्चर से. With the power of gratitude, Yeah. we get the cues from the universe. Okay, okay. Okay. So प्रकाश और अंधेरा और ये लाइट और डार्कनेस और ये सब झरना और वाटरफॉल और रिवर विच इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जो एक रिवर बहुत तेज स्पीड से बह रही है. ऑल दिस. सो व्हाट ऑल कैन वी गैदर? इससे क्या स्टोरी हम बना सकते हैं इससे? जस्ट क्रिएट अ स्टोरी. मतलब जो भी सिचुएशन है नेगेटिव, जो भी डिप्रेस डाउन फील कर रहे हैं, तो उसमें से वो मिस्टेक, मतलब उसमें से हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है. Okay. And we can change into blessings. Okay. Okay, now we can transfer immediately. Okay. ये आपने चैप्टर के रेलेवेंस में बोला. लवली, ऑसम. नाउ अपनी लाइफ के रेलेवेंस में आप बोलिए. जस्ट सपोज कि आपको ये पता नहीं है कि ये चैप्टर का ये है आज का, आज का मतलब हमारी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है. Okay. There is a ray of hope. Really, yes, yes, yes. We have a ray of hope. हमें कहीं ना कहीं अच्छा, मतलब हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला रहता है. Yes, really, really powerful. Yes, yes. हर अंधेरी रात के बाद उजाला होता है. Yes. It looks like a beach to me, like the water flows in and comes back again. So it's like a to and fro movement again and again. So basically, it gels up into the new water, leaves a little behind, goes back inside again, and gets new water from the sea again. So it's like in our life, it's a to and fro movement. We go out of the house in our life, like we go out every day or something. Then we get new opportunities or new learnings or new cues of life, and then we get that back home, we keep the rest, again go and get more. Like every day we gather new and come back. So, in spite of going at the same place, if we are working, we go to the same place, same office, but still we get something new. So it's like a silver lining. Yes, it's like a silver lining. Awesome. Amazing interpretation. Very good. Beautiful. So what is, you didn't connect with this. Okay, so you connected the light as a silver lining, the light which is coming from the darkness. That every moment there is a silver lining in our life. Is that what you want to say? Yes. Okay, awesome, awesome. So yes, anybody else? जिन लोगों ने अभी तक कुछ बोला नहीं, anybody wants to say anything? What is your perception? आपकी story क्या है? See, so beautiful, na? Each one of us seeing the same picture, same objects, same thing, but हर जन की everybody is having a different view, a different perception. Why? Because our belief systems are different. Our state of mind is different. Our way of interpretation is different. Our knowledge is different.
Yes, and but at the same time we all are unique. ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा है किसी का खराब है. Everyone is unique. Yes. Anybody else wants to say anything? Participate in this picture, because you know you will do something good for yourself. To me So, also, it It's looks like a water body. हाँ. Yeah, it looks like a water body and a whole fence around it. So, Okay. and the fence has little bit of hole so that light is peeking through. Yeah. Okay. Can we connect with our thoughts and our experiences? Can we connect with that so that things become little clearer? Anybody? हमारे thoughts से, हमारे experiences से, हमारे life situations से, people हाँ, around us, can we connect with that? See ये जो now, लाइट है, रे ऑफ लाइट इज लाइक अ मैजिकल थॉट, जो एक अंधेरे, जो बादल अंधेरे में से उसको उजाला में ले आएगी. yes, lovely. With the thoughts of gratitude. With the मतलब thought of the ray, gratitude. Really, really beautiful. Very, जो very powerful. रे You है, just shared. Yes. जो रे है, that is the thought with gratitude. Yeah. And that changes our thoughts, that changes our perceptions, that changes the life situations, right? Right. So gratitude is that thing which actually changes our energies immediately. It's the powerful, most powerful, emotion, feeling that transforms us. And it transforms not only us, but it transforms everything, every person, every situation. या तो चाहे हमें ऊपर से लगेगा कि बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, वी नो दैट अगर अंधेरा है तो उसके पीछे लाइट है. देयर इज लाइट बिहाइंड द डार्कनेस, एंड दीज आर द क्लाउड्स. और क्लाउड्स के बीच में जब सूर्य भगवान की रोशनी निकलती है तो कई बार ऐसा होता है ना, व्हेन देयर इज क्लाउडी स्काई, we see the sun's rays penetrating from inside and it falls. और जहां जहां सन की रेस फॉल होती है वहां पे everything lights up. Yes. Yes. So that is, yeah, beautiful, beautiful. So whenever we are surrounded by negative thoughts, जब हमारे लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, एक बार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, and the day goes like that, then the light of gratitude, उस समय अगर हमें याद आ जाए ग्रेटफुल होना जो कि है हमारे अंदर, the light of gratitude shines like the sun, from under the dark clouds. वो नेगेटिविटी से लाइट ऑफ ग्रैटिट्यूड निकलती है, एंड इट लीड्स अस टू द पाथ जहां पे हमें सब कुछ वापस हैप्पी हैप्पी दिखने लग जाता है. वी गो इनटू अ पॉजिटिव स्टेट अगेन. Okay, so let's look into our lives where we have, now coming back to the chapter, day 26, magically transform mistakes into blessings. So whenever, when the reader is reading the chapter, just look into our lives. हमें सबको अपनी अपनी लाइफ में देखना है कि हमने हमारे, मतलब अभी हम जब याद करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें ऐसे निकल के आएंगी जिनको हम याद करते ही we will feel irritable, we will feel angry, we'll feel fearful, we'll feel jealous, we'll feel envious. मतलब कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी जिससे हमें अच्छा महसूस नहीं होगा. तो डेफिनेटली उस जगह पे समथिंग इज हिडन. व्हाट इज हिडन? अ लेसन टू बी लर्न्ड. वो लेसन को अगर हमने लर्न नहीं किया उस इंसिडेंट से, तो हमारी लाइफ में और वैसी सिचुएशंस और वैसे इंसिडेंसेस और वैसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे. सो व्हाट इज आवर कॉल नाउ? सो व्हेन वी सी, अगर हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है वो मिस्टेक को, उसको हमें अब ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करना है? बाय द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, लेट्स बी लिटिल सेल्फिश, अगर हमने नहीं किया तो फिर वो और बार बार आता रहेगा. क्या हमने नहीं किया? दैट लेसन, जो हिडन लेसन है उसमें
हमको सीखना है उससे कुछ, कुछ हमें उसके अंदर से कुछ सीखना है, उससे हमें निकालना है बाहर, कि इस सिचुएशन से, इस मिस्टेक से, इस समथिंग हैपेंड विद दैट पर्सन सो मेनी इयर्स बैक, 20 साल पहले, 25 साल पहले समथिंग हैपेंड, और आज भी इस मोमेंट भी अगर मैं उसको याद करती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मेरे हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाते हैं, मुझे पसीना आने लग जाता है, मुझे गुस्सा आने लग जाता है, माई ब्रेथ्स बिकम फास्टर, या फिर मैं अपने ब्रेथ्स को होल्ड करने लग जाती हूँ, मैं सांस लेना ही भूल जाती हूँ. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज चेंजेस हैपन इन योर बॉडी, एंड इफ दैट इज हैपनिंग, दैट मीन्स कि आपको उसके और अंदर अंदर जाने की जरूरत है. Don't leave it for the next day or next moment. My invitation to all of you is, please, whatever, wherever you are, please complete this assignment today itself. Don't leave it for tomorrow. हाँ, वो अलग बात है कि आपको किसी और चीज के लिए कल करना है, that's fine. But आज की चीज आज ही करनी है, अभी ही करनी है, इस moment ही करनी है. So just try to identify while the reader is reading कि क्या, what is happening, what, क्या ऐसी चीज है. कई लोग ऐसा बोलेंगे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. दैट मीन्स योर माइंड इज फूलिंग यू. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने, एक बीइंग अ ह्यूमन, आपने कोई मिस्टेक की नहीं है और उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट, उसका एनर्जीज आप अभी भी कैरी कर रहे हो. इट्स इम्पॉसिबल. अगर वो ऐसा है तो फिर तो यू बिकम गॉड ओनली. सो जस्ट डोंट पुट लेयर्स ऑफ कुछ इग्नोरेंस का लेयर्स मत डालिए. डोंट बी इग्नोरेंट. Just identify that this chapter is really powerful, and remember, we are in the 4th week of our magic book journey, the last few days. These days are, every chapter is really trying to take out something from within us, अंदर से, बिल्कुल अंदर से, हमारे कॉन्शियसनेस के डीपर लेयर से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डीपर लेयर से कुछ ना कुछ निकालने का. This chapter is designed in such a way that it takes out something from within, from inside, deeper layers. So इस thought से let's start today's chapter. सब कोई अपने आप को बिल्कुल इस receptive mode में ले आइए कि there is something wonderful which is going to come in front of you. That beautiful learning जो आपने आज तक शायद नहीं कर पाई, आप नहीं समझ पाए, जो लेसन आप लर्न नहीं कर पाए, इस चैप्टर के द्वारा यू विल बी एबल टू लर्न दैट लेसन. यस, प्लीज कंटिन्यू. प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, V. 1954, media personality and businesswoman. अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलिए. अपने जख्मों को वरदान में हम बदल सकते हैं. Turn your wounds into wisdom. So powerful. And Oprah Winfrey is one of a very, very renowned media personality and businesswoman, and how she herself, when somebody says these words now, that person has actually experienced that in her or his life. And Oprah Winfrey, if you look at her videos, you will actually be able to, there's a show called Oprah Winfrey Show, which used to come earlier on television. I don't know whether it's coming right now or not, but she is a very powerful woman, and how she has transformed her childhood was really painful, and she shares also, and so how she transformed her wounds into wisdom. So we are going to learn in today's chapter that, and let's see how we are going to do it. Yes, please continue. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. So just as there is, sorry. So just as there is light behind the darkness, just as there is morning and then evening, and in the morning and night, and in the night only morning is hidden. Just as we see the sun rising and
we see the sun goes down and the moon comes out. But remember, in the sun only the moon is there. In the moon only the sun is there. Just think that way now. Let's increase our horizon of thinking. Jo, let's look at the bigger pictures now, because this chapter is taking us towards that space. Now the choice is ours. अगर हम वापस वही वही चीजें जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम अब तक सोच रहे थे और जैसे अब तक हमने अपनी लाइफ को लिया था, हमको वैसे ही उसे महसूस करना और देखना है, या we want to experience life in a different way from today, this moment onwards. जो untold blessings है hidden, every mistake में there is an untold blessing hidden. जैसे इस पिक्चर में कितनी सारी चीजें हिडन थी और हमने उसे डिकोड किया, वैसे ही हमारी कोई भी एक मिस्टेक को हमें लेना है, because every mistake is a blessing in disguise. मतलब उसमें कुछ छुपा है blessing, and today's magical practice will prove it. Let's continue reading. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser. So in a way, this para is telling us that become like kids, be like a child, accept your mistakes and move forward. Don't be harsh. मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैं ये mistake, we talk to ourselves ना, how could I do this mistake? मैं ये mistake, मैंने ये गलती कैसे की? How was it possible? And we go into that guilt. हम sorry बोलते हैं अपने आप को, दूसरों को, and it's fine. क्या जब हमारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम कैसा बोलते हैं ना कि मिस्टेक से ही आप सीखोगे, कोई बात नहीं, ये मिस्टेक किया आज, अब अगली बार मत करना. Yes, no, we say that to our kids, right? Yes. Yeah. So then why? Because why is it that adults are so hard on themselves? हम क्यों ऐसा समझने लग गए हैं, हमारी थिंकिंग ऐसे क्यों हो गई? क्योंकि maybe that we are thinking कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ मालूम है, क्योंकि हम एडल्ट्स हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम दूसरों के सामने रो नहीं सकते. Especially for male in our society, males are not allowed to cry. क्या तुम even when boys they cry ना, what do we say? Are you a girl that you are crying like this? ये शुरू से ये belief डाला है. So that's why males they do. किसी ने देखा है कि आपके husbands या आपके uncles या आपके parents में आपके father, उन लोग को आपका ज्यादा रोते हुए देखे हो, या अपने mother या aunts और your teachers, उनको आप ज्यादा रोते हुए देखे हो? Yes, no, anybody, can you share? Can you share, everyone? Have you ever seen your father crying or more your mother crying? इन दोनों में से किसको ज्यादा देखा है? Definitely mom. Yes. So why is it like that? Why is it? Have you ever seen your spouse crying? आपके husband को आपने रोते हुए देखा है कभी? Yeah, many times. Okay, many times. What about others? No. बहुत, मतलब अगर हम पोल लेंगे, sorry, very little. Yeah, so if we take a poll, तो फिर ये possibility होती है कि men are trained since their childhood, they are trained not to not to cry, just suppress. अपने अंदर रखो, अपने आप को deal करो, यही सिखाया गया है. So why are we so hard on ourselves? It is we have heard this na. It's to be human. It's, what is that line? I'm not getting it. It's air. What is it? Somebody can tell me? We all make mistakes, and we didn't make them, we'll never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. So it will come, I'll share it with you. I don't know what is that line, I'm not remembering right now. So just don't come from a space
wherein you are a human being. Think yourself that you are a human being, like just as a child can make a mistake. हमने ये गलती की है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसमें से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या लेसन निकल रहा है उसमें से. मेरा काम यही है कि अब मैं आज से जो भी मिस्टेक मुझे पास्ट में हुई है या अब होगी फ्यूचर में, टुडेज चैप्टर इज ट्राइंग टू टेल अस कि जो भी हमने मिस्टेक पास्ट में की है उसमें से हम क्या लर्निंग निकाल सकते हैं, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें सीखना है. दैट लाइन इज टू एयर इज ह्यूमन. मतलब मिस्टेक अगर करना है तो ह्यूमन है तो मिस्टेक होगी ही, एंड मिस्टेक होगी तो उसमें से हमें क्या सीखना है वो हमें सीखना है आज के चैप्टर से. यस, टू एयर इज ह्यूमन. मतलब ह्यूमन है तो मिस्टेक होगी, जरूर होगी, एंड दैट्स फाइन. एक्सेप्ट इट. डोंट फील लो अबाउट इट कि अरे मेरे से हो गई ये मिस्टेक. ओके फाइन. अभी उसमें से नेक्स्ट क्या करना है, हाउ टू गो नेक्स्ट, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप. ये हमें हमेशा तैयार रहना है इस ऐसे कि अब मुझे क्या करना है, क्या बेस्ट मैं कर सकती हूँ. आई एम गोइंग टू डू दैट. यस, please continue. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Beautiful. So we have the freedom to make our own choices in our life since the time we are born. We have got this free will of making our own choices. ये free will हम सबको मिली है. हमें हमेशा choice हमारे सामने होती है. But क्या होता है, अक्सर we say that because of this person I did this. हम हमेशा दूसरों के कंधे पे सवार होके दूसरों के कंधे पे अपने आप को रखते हैं और उसके कंधे के थ्रू अपने आप को देखते हैं. Let's stop doing that. Let's make our own choices. Let's be, empower yourself. Feel that freedom. वो freedom है हमारे पास. हमारे पास वो freedom है कि हम choose कर सके. कि what am I supposed to do? ये चीज है मेरे सामने. Now what am I supposed to do? Am I supposed to go this way or that way? वो path हमारे सामने रहती है. And we have the freedom, at the same time we have the freedom to make mistakes also. We say na that we learn from our mistakes. This sentence everybody must have heard. तो हमने बस ऐसे ही सुना है. Now let's understand the meaning of it, that how do we learn from our mistakes. There's also a saying, failures are pillars of success. अगर हमने कोई मिस्टेक की है और हमें लग रहा है कि हमने इस मे बी हमारे बिजनेस में, मे बी हमारे एनी डिसीजन इन आवर लाइफ, मे बी हमने अपने करियर के लिए कुछ किया है, मे बी कोई जॉब के लिए हमने अप्लाई किया और कुछ ऑप्शंस थे उसमें से हमने चूज किया, एंड देन वी रियलाइज दैट इट्स अ मिस्टेक. मे बी आफ्टर यू passed your 12th exams and then you wanted to choose a subject, like how nowadays the kids, they really have the freedom to choose. मतलब वो एक साल कॉमर्स करेंगे, एक साल they will go in the BCom stream and then they'll suddenly realize no, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को ये नहीं करना है. Somebody will go into science, they will explore it for a year and they'll say no, now I have to do commerce. So this is the confusion which is there. So we all have the freedom to be in that confusion and to learn from that confusion. So we all have that freedom. So एक रास्ता वो है कि उसी time just be in that receptive mode. Whenever that situation is there in front of us, open up your minds, open up your everything, be aware of everything, just see the pros and cons and then choose wisely. So then you will not be in that
space where you feel I have made a mistake. So we have all the choices in front of us. We have all the choices, and we have the freedom also to choose, because we all are born with that free will. And you know, sometimes, not sometimes, but all the time, when we make a mistake, we feel hurt na. We feel hurt. Sometimes we express, कई बार हम बोल सकते हैं, कई बार हम नहीं बोलते और अपने आप ही रखते हैं. Now this chapter is telling us to just bring that those mistakes जो आपने अपने अंदर ही रखा है, because what is happening, any कुछ हमारे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में there are certain trigger points, कुछ ट्रिगर्स आ जाते हैं कि वो मिस्टेक वापस याद आ जाती है. एंड अगर नहीं भी याद आए, सबकॉन्शियसली वो मिस्टेक है हमारे अंदर, शायद अभी दिस मोमेंट वो याद नहीं आ रही है, बट बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक, बिकॉज ऑफ दैट थॉट दैट वी आर कैरिंग, we are changing the vibrations of our body. And we know the law of attraction. The law of attraction understands only and only and only the vibrations of our thoughts, of our feelings. Unconsciously हमारी vibrations जो एक higher level पे होनी चाहिए थी, वो एक lower level पे या एक medium level पे operate होने शुरू हो जाती है. You know, we start operating and at that frequency, और फिर हम वही उसी situations को, similar situation को, similar people को अपनी life में attract करते हैं, और वही mistake हम बार बार करते हैं. Has anybody seen anyone in your life whom you can remember right now that they make the same mistakes over and over again, और उनको आप कितना भी बोलोगे उनको समझ ही नहीं आता, और वही मिस्टेक वो बार बार करते हैं. Like in your business you are doing, there's some client who has fooled you, or maybe your life, there's a partner in a business and उसने आपके साथ कुछ fraud कर लिया उस समय, and you are a person कि you just like forgiving everyone, आप उस space में हो. Okay, just imagine that आपके कोई partner है, उसने आपके साथ fraud किया है और आपने उसको समझ लिया है, but आपने उस समय ऐसा सोचा कि ठीक है उसने ऐसा किया, let me forgive him, okay, him or her. And next time again a person walks into your life, again somebody does a fraud in some other area of your life, again you'll say let me forgive. But at that point if you understand कि उस fraud से बार जो ऐसी situations और people आपकी life में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? Why is the universe sending me such situations and people every time? Anybody, can you connect with it? Anybody? Yes, no? Can you actually connect? Yes? Lovely. So then at that time, अगर आप चुपचाप अपने आप में just sit in moments of silence and just look into कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, what is the universe trying to convey to me, universe मुझे क्या बताना चाह रहा है इससे, God, भगवान मुझे क्या बताना, क्या सिखाना चाह रहे हैं, और ये क्या ये aligned है मेरी life lesson से, मैंने जो decide किया था. As you know, each one of us have chosen a lesson to learn in this lifetime. So whether we know it or not, but if you are aware in your day-to-day living, if you are aware to take the cues from the universe, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है. And this is the very reason why mistakes hurt, so that we learn from them. कुछ happy moments से do we feel hurt? No ना. जब भी कुछ अच्छा होता है, आते हैं, अच्छी चीजें होती है हमारे साथ, then we feel really happy ना. उसमें से कुछ ऐसा कुछ आगे ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ इससे क्या, what is that I have to learn. Of course there are things to learn after we read, if we are reading this book now we can understand कि happy moments से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. What is that to be grateful for those happy moments. उसको thank you हम देना चाहते हैं. But now today's chapter is about the mistakes, ताकि if we जो hidden mistakes जो हमने किए हैं, जिसकी hurt हम अभी तक carry कर रहे हैं, या फिर किसी के कुछ words हमें hurt कर रहे हैं, और वो words शायद इसलिए निकले होंगे क्योंकि
हमने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उन्हें कुछ ऐसा बोलना पड़ा हमें. Think that way, because everything, the circle is started from you only. It's not from the other person. वो आपसे ही शुरू होता है और आपके पास ही आके खत्म होता है. So now it's upon us to choose to complete that circle, so that बीच बीच में जो जो माउंटेन्स आते हैं, जो हिल्स आते हैं, वो आना बंद हो जाए. So this line is really beautiful. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. वो मिस्टेक को, एक मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में. आज हमने कुछ सोचा कि आज हम ऐसे से अपने दिन को हमने डिफाइन कर दिया है कि आज हम ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे. आज हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये मैजिक प्रैक्टिस आज हमें इतने समय के बीच में ही करनी है, 12 बजे के पहले करनी है या 10 बजे के पहले करनी है. बट अगेन वी गेट इनटू आवर अदर एक्टिविटीज और फिर सोचेंगे अच्छा शाम को करेंगे, शाम को सोचेंगे अच्छा हम रात को करेंगे, and next day आ जाता है, and then we are in the session and we say we didn't do. So it's a mistake you did, right? And you feel somewhere inside you feel, why am I like this? Why do I procrastinate? Why can't I manage time? Why can't I be on time? कहाँ पे भी मुझे जाना होता है, मैं उस जगह right time में क्यों नहीं पहुंच पाती हूँ? Why? So it's a mistake you are committing. It's a small mistake, but from smaller mistakes we can go to the bigger mistakes what we have done in the past. So let's start thinking that way. तो बार बार तो उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि now I'm going to take charge of my life. Now I'm going to just जो मैंने commit किया है time, जहाँ पे भी मुझे जाना है या जो भी मुझे करना है, उसको मैं आज करके ही रहूंगी या रहूंगा. I can, I must, I will. So when you say this, there's some power within, you get connected to your inner power, and then you are in a position not to make that mistake again. Please continue. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. First step is to own your mistake. How many of us can do that? बहुत पावर चाहिए उसके लिए कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, इसको सुधारना मुझे ही है. उस पर्सन मे बी बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कंडीशनिंग पहले हमारे दिमाग में आएगा तुमने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया. पहले ही we tell the other person because you said this, I did it and I don't know. And then we try to escape from that situation. But first, own your mistake. अपने आप से पहले ये कहना ही सबसे बड़ी, आपने 50% तो आपने क्रॉस कर लिया. You have actually, taken yourself, वो winning position में आप चले गए हो already. You have become 50% winner, तो आप already हो गए हो जब आपने अपने आप को उस पोजीशन में ले आए, जब आपने ये सोचा कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है. भले ही आपको लग रहा है कि वो उस समय लग रहा है कि उसके कारण, दूसरे पर्सन के कारण हुआ है, दूसरे इंसान के कारण हुआ है, पर जब आप उसको ओन कर लोगे, you take charge of your life, you become responsible. That is the first beautiful step that anyone can take. Yes, Hinaji has written, the gem cannot be polished without friction, nor man perfected without mistakes. Yes, that's true. But again, just add one more line to this, that अगर ये belief है आपके दिमाग में कि perfection लाने के लिए मुझे mistakes ही करने हैं, then you have to come out of it. Now, what is the next step? जो mistakes मैंने किए हैं, उससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? वो जब आप लेसन को अपने सामने ले आओगे ना, तो शायद ये लाइन आपकी चेंज हो जाएगी. जस्ट लुक फॉर योरसेल्फ, हीना जी. मिस्टेक्स की जगह हम ट्रायल्स बोल सकते हैं ना. जो भी मिस्टेक्स भी बोलोगे, ट्रायल्स भी बोलोगे, सेम चीज है. इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ. आपको अपने आप की बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है. जस्ट लुक, आप आज देखना इसे, आप सोचना इसके बारे में
कि अगर हमारे बचपन से हमारे अंदर बहुत सारी बिलीव्स आ जाती हैं, वी हैव टेकन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, फ्रॉम आवर मेंटर्स, जिनको हम बहुत जिन पे हमें बहुत विश्वास है, वो कुछ ऐसा एक लाइन बोल देते हैं, जैसे इस बुक में हमने कितनी सारी लाइनें हमको मिली है ना, सो उसे हम बार बार अगर रिपीट करेंगे तो वो एक बिलीफ बन जाता है. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर बिलीव्स इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन. पूरा एक सेशन उसी का होगा कि बिलीव्स के कारण, जो हमारी ओल्ड बिलीव्स होती हैं, जो हमारे ओल्ड थॉट्स होते हैं, जो हमारे बिल्कुल एक एक सेल में हमारे घुस गए हैं, उनके कारण हमारी जो करंट लाइफ है वो कैसे दे प्ले इन आवर करंट लाइफ एवरी मोमेंट. सो हिना जी, कमिंग बैक टू दिस, दैट अगर आप में ये बिलीफ है कि मैन में परफेक्शन तभी आएगी जब वो मिस्टेक्स करेंगे. मिस्टेक्स में से वो मतलब के ढूंढ पाएगा कि मुझे आगे क्या करना है. एग्जैक्टली, तभी yes. परफेक्टेड होता है. हाँ, तो वो ढूंढना बहुत जरूरी. दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट, दैट टेक आउट व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक. उसे आपको निचोड़ के निकालना है, उसे बिल्कुल अंदर जाके निकालना है. इनिशियली ऊपर लेवल पे आपको नहीं दिखेगा. I remember first time when I read this chapter, second time when I read this chapter, मुझे वो मिस्टेक कुछ आ ही नहीं रही थी. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मिस्टेक ले सकती हूँ मैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था. But then when I actually was in that space, maybe मेरी gratitude की space, जो घड़ा था वो पूरा भरा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे अपने में जो कमी थी वो नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं दूसरों में ही कमियां ढूंढ रही थी. तो जब ये ग्रैटिट्यूड का, जब एक्नॉलेजमेंट का, जब ह्यूमिलिटी का, जब एक्सेप्टेंस का, जब ये घड़ा भरने लगा, तब मुझे वो समझ आया कि हाँ, कुछ 10 साल पहले मैंने ये मिस्टेक की थी, जिसका भुगतान मुझे आज तक करना पड़ रहा है. तो फिर मैंने जब उसमें से लिखना शुरू किया तो कितनी सारी लर्निंग्स मुझे मिली उसमें से, एक नहीं बहुत सारी लर्निंग्स मिली मुझे. सो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ट्राइंग टू टेल अस. यस, प्लीज कंटिन्यू. कई बार ऐसा होता है ना वंदना जी कि भाई हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं कि ये हमने ये गलती की है, आप ये मत करो. हाँ, कि लाइक बिजनेस में है, लाइफ में, तो एग्जाम्पल देके उनको समझाते कि भाई हमने तो ये की है, आप ये मत करो. तो तभी ये नो, दिस चैप्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हीना जी. ये ठीक है, आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल बराबर है, पर ऐसे करने से आप अपने बच्चे को डिसएम्पावर कर रहे हैं. ये हमने अपने पेरेंट्स से लिया है और हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, पर आज की जनरेशन, दे वांट टू लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स. Yes, Ishita ji, do you agree with this? Yes. Yes? Yeah. मतलब कितना भी people tell you, like for example, right now I recently got engaged. So it's a basic nature of any mother. She would just say कि, you should like learn to adjust or something like that. It's a basic thing which any mother would just tell, Yes. But then I would be like, why should I always adjust? Being me, I would just say that कि yes. मैं क्यों adjust करूँ, वो तो दोनों को करना पड़ेगा ना. It's like both end thing. Yes. So that's how our generation is, that we don't want to listen to what they all are saying. We'll go there, experience, and then we'll decide. So for now, it's like almost 6 months or something that I know the person, probably around 6 months, 4-5 months. So now I understand, okay, sometimes I do connect and sometimes I still stay on my word. It's like that. It's still on a 50-50 thing. So yeah, it makes a difference. Like how much ever you all will tell us, we'll still wait to experience it. It's like that. Yes, and that's the right approach. I feel I am with the current generation. That's the right approach, क्योंकि उसमें there is no suppression. You have the freedom. आपकी जो अंदर की जो रोशनी है ना, वो बाहर निकल के आती है. You actually flower the way you are born. जो आपकी soul power है, वो बाहर निकल के आती है. And it's nice. So this sentence ना, it's air to be human. It's humans make mistakes and it's nice. It's you learn. जब आप अपनी mistake से learn करते हो ना, तो फिर वो mistake आप वापस नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे आप. You can just look into yourself. हीना जी, शायद आपकी हम सबकी लाइफ में ऐसा हुआ है, and that's what we are trying to explore today. उसे हमें सामने लाना है, और जब आप वो सामने लाओगे ना,
तो आपको महसूस होगा वाओ वाओ इज दैट पॉसिबल. सो एक एग्जाम्पल है इस चैप्टर में जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें जाना है. यस, प्लीज कंटिन्यू. Yeah, so it's mainly about realization, I feel. Like whether you're told, the listening thing and the realization thing makes a lot of difference. Yes, very true, very true. Yeah, but इसमें भी there are many people who would like to, take the word of their parents or they take the word of their teachers, like just Yeah. they would like to follow. So there is always in the world there are two sides, just as there's Yeah, two sides even of I the would say, even I would do the same. Like in certain situations, I might just agree to what, like Yes. for example, this magic thing is also like sometimes it's illogical because there's no logic. It says itself, right? So वो Yes. start में आ गया, इसलिए I could take it. When I'll just keep thinking about the logics and I would have never followed it probably. But I Exactly. took your point. I took her thing as a fact. Okay, fine. There's no logic here, so keep your brains aside and talk. So it's like that. And it must have touched you somewhere in your heart. Yeah, yeah. And Yes. maybe the first session, second session, and then then you knew. So everybody, जब तक कोई we can use this word, हम बहुत negative way में से use करते हैं, but to be selfish, अपने आप के लिए अगर कुछ करने को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो we actually start following it. Yeah. It touches our heart at some space. Of course, we followed what others told us, but उसमें भी somewhere it must have touched you. That's why you started and you understood that this world is not about logics, it's about magic. Yeah, थोड़ा सा आपने उसको loosen up किया अपने thought को, and then you started moving. Yeah, I told her in the start that my selfish motive was only one, that मुझे सुबह जल्दी उठना है कुछ भी करके. मतलब it's my बचपन से लेके अब तक I have never I couldn't ever achieve it, and that was my only aim when I came to this session. जितना भी मतलब I think Namrata Bhabhi told me, Hina Mami told me, but I was like, okay, 5:30 उठता है ना, ठीक है, let me just try that. I don't know what I'll achieve, what I'll get. I had no other expectations or anything. Obviously, I did a lot more, but still, the initial motto or initial selfish reason was only this, that I want to achieve getting up early. That's it. Beautiful. Yeah. So it And I was did your it. calling and the universe led you into it and you came. Yeah. Yeah. Yes. So through Hina ji and Namrata ji, it was, the universe, you got the cue from the universe and you took it. Yeah. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. Please continue reading. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them and they had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. So this is a very, very beautiful example. We are going to read it further. Ki first take the responsibility that the mistake was ours. Because we were the one who chose to. किसी ने बोला था कि आपको स्पीड में चलाओ, क्या पुलिसमैन ने आके आपको बोला था स्पीड में चलाओ, क्या आपके पास में जो बैठे थे उन्होंने आपको बोला था आप स्पीड में चलाओ? हाँ, अगर बोला भी होगा, पर चूज आपने किया था कि आपको स्पीड 80 की स्पीड से आपको 120 की स्पीड में चलाना है. ये चूज आपने ही किया ना. अगर किसी ने किसी ने आपको कहा कि चलो you really enjoy, you feel like you're flying in the air and just speed up, and you said okay let me experience it, वो thought किसके दिमाग में आया? आपके दिमाग में ना, कि आपने आंख बंद करके उसने जो बोला और आप शुरू हो गए. ऐसा नहीं होता है ना. Yes, no, you choose, you always have the choice is ours. किसी को everybody is understanding this, समझ में आ रहा है? Yes, no. Yes. Yes. Anybody is disagreeing with it? किसी को लग रहा है कि नहीं ये गलत है, हम नहीं चूज करते हैं, किसी को ऐसा लग रहा है? Please tell me just now only. Yes, no, nobody. Okay. No, please, no. Okay, please continue. You are human.
You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. So, how do you learn from a mistake? Gratitude. Beautiful. Just remember this line. This is a takeaway from today's chapter. How do you learn from a mistake? जो हमने अभी तक बातें की ठीक है, बट पहले हमें क्या करना है? ग्रैटिट्यूड. Gratitude is the biggest tool that makes you learn from a mistake. वो जो learning उस mistake में छुपी है, वो पहले हमें gratitude करने से ही मिलेगा. Just remember this. Please continue. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? So ask yourself, which would you prefer? You have a choice. See, here you have a choice. अगर आपको मिस्टेक्स करते ही जाना है और वो अट्रैक्ट बार बार आपकी लाइफ में बार बार और मिस्टेक्स क्यों होती जाएंगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड अगर आपको ब्लेसिंग्स करना है तो यू विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स. दैट्स व्हाई वी स्टार्ट आवर डे एंड एंड आवर डे विद ब्लेसिंग्स ना. दिस इज द साइंस. अगर हम वो ही करेंगे तो हम वो ही अट्रैक्ट करेंगे. तो मिस्टेक्स जो होने वाली होगी वो भी कम हो जाएगी बिकॉज वी आर ऑलवेज इन दैट हैप्पी स्टेट. वी आर ऑलवेज इन दैट जॉयफुल स्टेट. वी आर ऑलवेज इन फीलिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आर वी रियली फीलिंग और वी आर जस्ट सेइंग इट? वो एक रियलिटी चेक हमें अपने आप में करनी है दिन भर में कि क्या हम रियल में आर वी फीलिंग लाइक दैट. So what if we are feeling, then what are we attracting? And if we are attracting, then how are we feeling? It's a whole cycle which keeps on moving like this. Yes, please continue. So now the choice is ours. Each one of you choose what you want to do. What is your desire? Do you want to move closer to your dreams? आपने जो dreams लिखी है उससे आप पाना चाहते हो, आपकी wishes को पाना चाहते हो, तो फिर आप क्या करना है? ये चैप्टर आपको क्या बोल रही है? So please continue. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, but because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. So all these things, just see if you are feeling connected. All of you just look into your lives. अब अपनी अपनी लाइफ में देखिए कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप अभी भी आज, चाहे वो छोटी मिस्टेक थी या बड़ी मिस्टेक थी, पर आपको आज अभी इस मोमेंट अगर आप याद कर रहे हो तो आपको योर हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाती है या फिर आपकी सांसें थोड़ी स्लो हो जाती है, रुक जाती है, आपको अंदर से गुस्सा आने लग जाता है. एवरीथिंग समथिंग विद इन शिफ्ट्स. कुछ अंदर से शिफ्ट महसूस होगा आपको. either you will feel irritable, आपको गुस्सा, मतलब कुछ तो कुछ होने ही लगेगा या आप चिंता करने लगोगे. Something will happen. You will be where? Anybody? कहाँ पे होगे आप अगर वो मिस्टेक को याद करोगे तो? किस remember that feeling chart? You will be below the line. तो उन इमोशंस में आप वापस जाने लग जाओगे और जैसे ही आप उस इमोशंस को टच किए, मतलब क्या होगा? आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अंडरस्टैंड्स ओनली लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे. सामने कोई जो पर्सन आएगा उससे आप वैसे ही बात करने लग जाओगे बिकॉज यू आर इन दैट स्पेस. आप इरिटेबल स्पेस में हो, आप वैसे ही आंसर करोगे, वैसे ही आपकी बाकी सिचुएशन से डील करोगे. योर चाइल्ड कम्स टू यू एंड यू विल जस्ट से
unnecessary you'll get angry on your child. So ये एक पूरा cycle चालू हो जाता है. So now what, and कई बार क्या होता है, unconsciously होता है, मतलब कि वो अंदर आपके अवचेतन दिमाग में वो है अभी भी, उसके कारण आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, आपकी पूरी नेचर चेंज हो गई है. ऐसे उस चीज को आपको अपने सामने लाना है. हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको याद नहीं आए या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पर कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई होगी जिसे आपको आज सामने लाना है, ताकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए आज बहुत अच्छी है, यू आर लाइक एन एंजल, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस, एवरी टाइम यू आर, everybody is appreciating you, but still आपकी frequencies और higher चली जाएगी, because there is no end to improving your frequencies. We are still at the level of gratitude. अभी तक love को हमने feel नहीं किया है पूरी तरह से. अगर आपको शायद आप इस गलत फहमी में हो कि आपको लव फील हो गया है, तो प्लीज इससे बाहर निकल जाइए. लव इज, when we talk about the power book, in the power book, love is not what the love we think love is. प्रेम जो मोह से परे है, वो लव हमें पावर बुक में सीखने को मिलेगा. नॉट द लव बिटवीन योर बॉयफ्रेंड, नॉट द लव बिटवीन योर स्पाउस, नॉट द लव बिटवीन योर चाइल्ड, नॉट द लव बिटवीन योर पेरेंट्स, बिकॉज ये सब कंडीशनल लव है, ये सब कंडीशंस पे है. अनकंडीशनल लव, that is what we need to feel now. So slowly as we are in this magic book, and when we are all ready to step into the power book, my invitation to all of you is that for those who have not been doing the assignments, आप power book को समझ ही नहीं पाओगे. You will not be able to understand that book unless and until आपने एक एक चीज को grasp किया है इस book से, and to the core of your heart. So please do this assignment, at least those who are not been doing the assignments पहले से, जो जिन लोगों ने सारी assignments नहीं किए, आज के assignment जरूर करिएगा. Don't, your conscious mind will take you away, but just hold yourself there. Okay, please continue. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are 2 questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important. These 2 questions to yourself. What did I learn from the mistake? मैंने mistake से क्या सीखा? So it will be easier for you to write down. And what are the good things that came out of the mistake? ये 2 question आप बोलोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आएगा, सामने सारा picture आपके सामने आ जाएगा. Yes. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. First, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Second, I'm grateful to the policeman because if I'm honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Third, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Fourth, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make my watch my speed and drive more carefully in the future. Everyone, please listen to it carefully. How beautifully this small thing, otherwise क्या होगा कि अगर the police catches us,
we will be, you know, instead of being grateful to dur, we will just start blaming the police. अरे उनको तो फाइन लगाना होता है, because you know उनको तो पैसा मिलता है, वो पैसा खाते हैं, उन्होंने चालान थोड़ी बनाई है, वो पैसा उनके पास ही जाता है. And all these stories will start coming in the mind. Yeah, but right अब तो शायद, you know, वो it comes, वो एक मशीन लगा होता है ना. I don't know about all the other cities, but here in Mumbai, even if you cross the line, you cross the signal, थोड़ा सा आगे भी जाओगे तो चालान अपने आप आपके फोन में आ जाता है, and then you have to Yes. pay the fine. Yes, I think it's all over India now. Yes. Yes. No? Not really. I think it's in our Mumbai only. Oh, okay, okay. It's there in Kolkata, Mumbai, I know, and in Delhi, but so I don't know whether, yeah. So this is what happens now in Mumbai. But otherwise, you know, don't we go into that blame game ki police ko we start blaming. But instead of doing that, see how Rhonda Byrne is telling us, see how the author is telling us ki what was the learning from it. So beautifully it's described. So everyone, be attentive, be alert, and listen to it. Yes. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Sixth, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Seventh, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Beautiful. Yes. Eighth, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Ninth, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10th, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Yes. So everybody understood what these 10 blessings are trying to convey to us. Has everybody identified a mistake in their life? Yes, no, yes, yes, whatever, just say. सबको identify हो गया है या नहीं? Yes. Yes. So are you ready to sit with it just after the session? Yes, no, or maybe Yes. Yes. lovely, Obviously. lovely. So grateful to all of you. So please take it. And these last 3 lines are really powerful. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. Just imagine, कभी सोचा था कि एक mistake से इतनी सारी blessings मिलेगी. We have to write 10 blessings. So, you know, your understanding of life will be completely different. मतलब कि आपने एक full stop लगा दिया है कि वैसी सिमिलर मिस्टेक्स आपकी लाइफ में अब होनी ही नहीं है. तो आपको क्या मिल रहा है एक्चुअल में? आरंट यू गेटिंग डिविडेंड? डिविडेंड कब मिलता है? जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तब, राइट? यस, नो? Yeah. So it's an additional bonus that we are getting by doing this assignment. What the book is telling us, what the chapter is telling us, just by devoting 15 minutes, 20 minutes, maybe it will take you max to max half an hour, not more than that. और वो आप किसके लिए दे रहे हो? अपने आप के लिए, just for you and you. आप अपने आप में कुछ आपकी लाइफ, मतलब आप यू आर गोइंग मोर क्लोजर टू योर ड्रीम्स. सब आप बस आप ऐसा समझ लो कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी जो ड्रीम्स है,
जो ड्रीम्स और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो और रिड्यूस होती जा रही है. यू आर मूविंग क्लोजर टू योर ड्रीम्स. जिन लोगों को जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसमें से शायद अभी तक कुछ अगर नहीं मिल पाया है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. जो आपकी जो लाइफ लेसन है वो आपने अगर लर्न नहीं किया है तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स. हाँ, कुछ छोटी छोटी ड्रीम्स आपको जरूर मिल रही है एंड इफ यू आर कंटेंटेड एंड हैप्पी विथ इट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. पर अगर आपको हर ड्रीम को फुलफिल करना है, हर विश को फुलफिल करना है, आपको उस कल्प वृक्ष की तरह बनना है, दैट विशफुल ट्री की तरह बनना है, जो आप जो सोचो अभी इधर और इधर होने लगा, जो आप अभी आपने एक बोला एक वर्ड और वो चीज आ गई सामने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. That is also possible, and that is what this book is trying to tell us. This book is trying to take us to that space. I was the creator once, let me become what I was. ये लाइंस ऐसे ही नहीं लिखी गई है, किसी ने एक्सपीरियंस किया है completely. And these lines are not my lines, these lines are from an Upanishad. I was the creator once, let me become what I was. So let us all make a promise to ourselves कि आज से अगर एक छोटी मिस्टेक भी मैंने की तो उसमें से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है. कुछ मिस्टेक्स की तो ऐसे ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, आज ये मिस्टेक मैंने की, इसके पीछे ये अच्छाई छुपी थी, ये मुझे सीखने को मिला. और फिर आप जब लिखने लग जाते हो ना, देन एक्चुअली वेयर इज इट गोइंग? इट्स गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. बिकॉज जो हम लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है, और जो हम लिखते हैं कुछ सीखने के हिसाब से वो वापस हम उधर ही डाल रहे हैं, वही स्टोर कर रहे हैं in different files. So we'll talk about the how this ये पूरा process क्या है, the theory of the mind we are going to talk about in the action workshop. Again, this is also one of the things which is really beautiful to understand कि जो सारा जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे thoughts, हमारे beliefs, हमारे feelings, ये कहाँ पे कैसे कहाँ से आ रहे हैं, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ बट और सारी लाइफ जो हमने ली है, वो सारी मेमोरीज कहाँ स्टोर हो रही है. we'll understand, we'll explore all that. So just for right now, just understand that वो जो मिस्टेक जो हमने आज ली है, that mistake which I have chosen and I want to write my blessings on that, then after that the kind of power, the kind of happiness, the kind of joy, the kind of gratitude I'll experience will take me to another level. It will be at another level, I'm really promising you. आपको इतना लाइट फील होगा अंदर से कि इतना मतलब आपको पता भी नहीं था कि आप इतनी वेट को, इतने बैगेज को अपने साथ में ले लेके चल रहे हो. उसे कैसे निकालना है ये आज का चैप्टर हमें बता रहा है. So let's read the magical practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one mistake you made in your life. Third, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Fourth, to help you find blessings, you can ask yourself the questions, what did I learn from the mistake, and what are the good things that came out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, thank you, Ishita ji, for reading the chapter for us. Thank you. So there are 3 parts for आज का assignment. First and last तो हम रोज करते ही हैं. The first is that और शायद हमने कर लिया है, count your blessings before we came to the class. आपको एक mistake already identify हो गई है. It becomes really easy. Then you just sit down and write. I'm telling you again, maybe आपको कुछ आएगा और आप बुक बंद करके रख दोगे. Don't do that. Just think
हो सकता है आपको 4 ही आए, 3 ही आए, पर आपको 10 निकालने हैं। जब आप अंदर ही अंदर जाओगे ना, जैसे एक एक गोल्ड माइन है, उसके आप जितना अंदर जाओगे उतना और सोना निकलते जाएगा। वैसे ही यू हैव टू टेक आउट मोर एंड मोर गोल्ड, दैट लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक। जितना आप ब्लेसिंग लिखोगे ना, उतना आपकी लर्निंग और पावरफुल हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट द होल आइडिया इज अबाउट today's assignment. Yes, so thank you everyone for being in this session. And anybody wants to ask anything or share anything before we end today's session, you can go ahead. किसी से कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, just with regards to today's chapter, कुछ पूछना है या फिर कल के असाइनमेंट के लिए कुछ शेयर करना है, you can do it. If not, then we are all ready to end today's session. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much for being there. Thank you. And have a lovely, lovely, magical, gladful, happy, joyful day. Thank you. Thank you so much. Thank you.